मणिपुर की आयरन लेडी कहे जाने वाली रोम शर्मिला मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। 16 साल का उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा पॉलिटिक्स के साथ। रोम शर्मिला हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, 16 ईयर का जो एक्सपीरियंस है आपका पॉलिटिक्स का, वो किस तरह का एक्सपीरियंस था? As for me, politics is just the thing, the expansion of the family politics. When the system of running a family, just like this, the expansion of the system, and I didn't bother about the political system, the society. Just I felt the wrong impacts. I really felt of it, but the sense of politics as me politician, I never inculcate such things applying to myself. What I really try to enter into politics right now is just comes automatically due to the circumstances, due to the ineffectiveness in the non-violent means of protest by making fail by the concerned authority. आपको क्या लगता है कि इंडिया का जो अल्टरनेटिव है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, क्योंकि आप एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को छोड़कर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए हैं? I have already said of it. I really do need the voice of the people's power to have heard of my voice. And after such prolonged non-violent struggle for 16 years, I have to test the strategy of the democratic power, democratic rights by seeking the people's votes. ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप रहे, आप हंगर स्ट्राइक पर थे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट करती थी। जब आपने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी, जहाँ आपने हंगर स्ट्राइक छोड़ी, तो सारे लोग आपके विरोधी हो गए, आपके परिवार के लोग भी आपके एंटी हो गए, आपके दोस्त भी आपके एंटी हो गए, पूरी की पूरी मूवमेंट आपको के एंटी हो गई और आपको धमकियाँ आने लगी। इसको आप कैसे देखते हो? In the past, while I was just the symbol of resistance, without any hope, without any chance of connecting with people's hearts around me by imprisoning of me. They just remain contented with my sacrifice, and they just fell blindly proud of my struggle, and
just visualize of my martyrhood with the sense of worshipping of idols. As for me, a woman or just as a humanity in a democratic society, I want to taste all senses of life, all sharings of life, worries and happiness, and sharing of burdens, everything else, sharing and enjoying all these things together against their mindset. And I really want them to make them know my real being. I don't want others worship me after my passing away from this earth as if I were a god in the sense of sacrifice. But what I really want is being a triumphant, being the winner of the real right cause, with joining hands together when I'm still living. Will you announce new party in next days? We are trying to form a new party with inclusive participation in forming of it from all communities of our society, of our state. अरविंद केजरीवाल से जो मुलाकात हुई आपकी, वो अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग कैसी रही, क्या कहा उन्होंने? I don't think it need to be discussed with others in the matter of the counseling. Just I need to absorb of it, and if I able to apply it along with the volunteers, it will be good. And it is not really necessary to share the advice. Let it be alone. अरविंद केजरीवाल आपकी सपोर्ट करेंगे? मणिपुर आकर अरविंद केजरीवाल इलेक्शन में आपकी सपोर्ट करेंगे? I hope his moral support will always be there to empower of the people's force to win the election, to send the dirty politics which is now prevailing. Will you contest election? I have already announced it. I will stand as the candidate of CM. I mean, contesting the election against CM Ibobi. आपको कितना दुख हुआ, जो आपके सपोर्टर थे, जो आपके पेरेंट्स थे, जब आपने हंगर स्ट्राइक छोड़ी तो सब आपके खिलाफ हो गए? कितना दुख हुआ आपको? I am fighting the struggle as a public figure to sense the society's
destructiveness, the negative system of the society. So it doesn't matter whether my blood relatives oppose or support me. Okay. तो ये थे रोम शर्मिला, जिनका कहना है कि वो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे और नई पार्टी फॉर्म करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक छोड़ी है। कैमरामैन गिरीश के साथ यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।